Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 4th of July. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. So do watch these videos, they are critically important for the competitive exams. In this video students, we will be talking about CR Patil, who has launched the Unified Flood Forecasting System, that is C-Flood. Then India and United Arab Emirates will be exploring the collaboration in the green steel and high grade aluminium. What is this green steel? We will be discussing in this video. Then CEA and IIT Roorkee, they have signed an MOU to boost the power sector research and capacity building. And Government of India has renamed NIPCCD as Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development. All these things and many more will be discussed in this video students. Also, if you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. Union Minister CR Patil, right? He's our Union Minister of Jal Shakti, right? He has inaugurated this Sea Flood. This is a web-based. It is a web-based flood forecasting system. That means if in an area there is a chances of flood, then this system will be giving an early warning system. And this is a very important step in India's flood management and disaster response framework. This sea flood, it is executed under the National Supercomputing Mission, jointly steered by MEITY, that is Ministry of Electronics, Information and Technology, and Department of Science and Technology. Right now, this question can be asked that this web-based portal, that is flood forecasting system by the name Sea Flood, it is developed by whom? It is developed by CDAC, that is Center for Development of Advanced Computing. It is Pune, Maharashtra based. This comes under MEITY, right? First. Second, CWC. So CDAC and CWC, that is Central Water Commission, they together developed this Sea Flood. This will be using 2D hydrodynamic modeling to stimulate the flood scenario, and if that model predicts that there can be a chance of high flooding in near future, this system will be giving a warning. Right? So take a note of this students, important. Right? This is your Sea Flood, collaboratively developed under by CDAC and CWC. Next is India and United Arab Emirates. They will be exploring the collaboration in green steel and high grade aluminium. See, first thing students, what is this green steel? We know steel. Now there is a term ahead of it, that is green, and we know green is used for the clean fuel, clean energy that does not create pollution. So the steel that will be made using the clean fuel and energy, that is your green steel. Even few time back, or I think few months back, there was a news that stated that the government of India is promoting the manufacturing of this green steel, and they are also incentivizing the developers, that are the manufacturers who are making this green steel, as well as they are incentivizing the consumers so that they can shift to the green steel. Reason being is that it will be using clean fuel and clean energy to produce this steel, as the steel manufacturing consumes a lot of energy and it develops a lot of pollution, right? So with this green fuel and clean energy, the pollution can be reduced to a large extent. Hence, we are promoting this green steel as well as high grade aluminium. Right? And also here it is India and UAE. Hence, both the sides have discussed a plan to produce and trade premium steel and aluminium products that will cater to the mobility and high-end manufacturing sectors. Also remember students, India aims to achieve an annual steel production capacity of 300 million tons by 2030. Moving on, CEA, that is Central Electricity Authority, and IIT Roorkee. Where is IIT Roorkee? IIT Roorkee is in Uttarakhand,
right? So CEA, Central Electricity Authority, and IIT Roorkee, they have signed a memorandum of understanding that will foster knowledge sharing, capacity building, and interdisciplinary research in the power and energy sector. This agreement will leverage the expertise and regulatory insights to accelerate India's clean energy transition to achieve the net zero emissions goal of India, that is to by 2070. Here various research and development will be taking place. Focus will be on sustainable development. We will be seeing energy transition here from non-renewable to renewable sources of energy. Moving on. Next, Government of India has renamed NIPCCD as Savitribai Phule National Institute for Women and Child Development. So Union Minister Annapurna Devi, Union Minister of Ministry of Women, Child and Development, has officially renamed the New Delhi based National Institute of Public Cooperation and Development as Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development, and this change of name will officially take place from 19th of June 2025. Next, and this renaming, as you can see, Savitribai Phule, right? This honors Savitribai Phule, who was a 19th century educationist and a social reformer. Moving on. Next is RITES. They have secured the International Locomotive Order and Domestic Railway Redevelopment Contract, right? RITES, that is Rail India Technical and Economic Services. There is also REITs. REITs are Real Estate Investment Trust, right? RITES, they are also REITs, so do not confuse it with them. REITs are basically an instrument that are listed on NSE and BSE, where you can buy them in order to have a commercial exposure or real estate exposure with a small amount, and they will be providing you a rental income based on which every quarter you will be getting the return, right, in the form of dividend. Let's not go there. Just remember, this is not that the real estate one REITs, it is your Rail India Technical and Economic Service, right? It is Gurugram, Haryana based. It is a Mini Ratna Category 1 Schedule A CPSC under the Ministry of Railways, and they have announced that they have secured orders from the African Rail Company and Southwestern Railways. The combined value of these contracts will strengthen the REIT's position for continued growth both in international and domestic railway market. Another interesting thing from you can understand here is that as now Indian companies, right, they are getting order from international companies, from international market. That means we will be getting, that is the imports, or we can say the exports will be increasing here, right? We will be bringing more dollar in our country through the contracts here, right? Take a note of this, students. And this contract is, or this order is valued at approximately 3.6 million, not billion, 3.6 million dollar. That is approximately 30 crore rupees. Right. Apart from this, one more thing, remember, REITs, they have also partnered with Aryan, right, and they have secured a letter of acceptance from SWR to redevelop the Tumakuru railway station, that is in Karnataka, and the contract value here is 37.81 crore rupees. So remember this, students. Next is international affairs. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, as you can see him in the picture here, he was on a visit to USA recently from 30th of June to 2nd of July. Right? During his, we know, first of all, you need to understand that, students, in USA, we are seeing that the trade war is going on, right? And heavy penalties or heavy tariffs have been imposed on India by USA, and it is said that on some commodities almost 500% tariffs has been imposed, right? So the geopolitical is haywire, right? And we cannot say what can happen in future. Even now Donald Trump and the Elon Musk, they both are also fighting, right? We are seeing war is going on. We saw Iran and Israel war was there. Ukraine and Russia war is currently going on. So we cannot predict that what can happen in the future, because it is a future of uncertainty, right? And during this time only, our External Affairs Minister was in USA from 30th of June to 2nd of July. This was a 3-day long visit, and it was at the invitation of USA Secretary Marco Rubio, and he wanted External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to participate in the Quad Foreign Ministers meet. What is Quad? Quad is basically a group of nations that is formed to counter the presence of China in the Indo-Pacific region. In the Quad, who are the countries? This is your homework, students. We have done multiple times. There is an exercise also that Quad countries can perform, that is Malabar exercise. Your homework is to tell me which 4 countries are there in this Quad. Right? Then
Here, during this, Dr. S. Jaishankar, he inaugurated the exhibition of the human cost of terrorism at the UN headquarters in New York. Apart from this, he also launched, or the Quad Nations, they have launched the first ever at sea observer mission, right? This aims to blossom maritime security and interoperability in the vast Indo-Pacific region. As I mentioned, the Quad was formed, and the main reason that Quad was formed was to counter the presence of China in the Indo-Pacific region, right? So coming back, it was the at sea observer mission that was launched. That was the first ever mission launched by Quad Nation. Then Dr. S. Jaishankar, he inaugurated the exhibition that is human cost of terrorism and UN headquarter, right? Next remember the Coast Guard of Quad Nations, they have also launched the Quad at Sea ship observer mission. So this is your at sea observer mission. Also, Quad nations are focusing on the critical minerals now, because these critical minerals, they are critically important or very important for the development of any nation, because we are seeing that these critical minerals are being used in various products in today's generation. Moving on, Ghana, they have launched climate resilient wheat initiative in collaboration with India, right? So this is climate resilient wheat initiative that has been recently launched by Ghana and India. From India, it is Council for Scientific and Industrial Research and their arm Crop Research Institute that will be partnering, or that will be working with Ghana's various industries, right? And what will happen here is that with this we will be seeing that more research and development will be done in the climate resilient wheat, right? So that we can make such wheat that is climate resilient, right? That is more stable, that can withstand the changes in temperature, that can give better quality of wheat, and also it can also enhance the quantity of that particular growth or the crop, right? So take a note of it. This is Ghana and India. And also remember, Ghana has launched climate resilient wheat initiative in partnership with India's Arima Farms and CSIR's arm CRI. Also they have launched, or basically this initiative will reduce the India's dependence on import, as India imports wheat and the imports are crossing $400 million annually. Also this will boost the local farming, and this program will be introducing Wheat Pride 999, right? This is a variety of wheat that has been developed by India's Green Pride, right? That will be boosting the, as I mentioned, growth of, or the quality or the quantity, as well as it will make the wheat more climate resilient. Next is RBI. They have released their biannual financial stability report for June 2025, right? This was released this is the biannually, that means half yearly publication of the financial stability report, FSR, has been recently released. This report is presenting the collective assessment of the subcommittee of the Financial Stability and Development Council, FSDC, correct? And this is on the emerging risks to the stability of the Indian financial system. See students, what now is happening in the world is that AI is coming, and AI is already here, and because of this our IT service sector is facing tremendous heat. The reason for this is that earlier what used to happen was that the companies abroad, they used to hire Indian talents because we used to provide them the same service at a very cheap cost. But now the AI agents can do the same work at a even lesser amount. So what will happen is that these companies will be ditching the developers or the software engineers or the engineers and Indian employees, and they will be targeting these agents because it can run 24/7. It won't require, it cannot perform errors, right? At maybe in a year or two they will be so high, or they will be so advanced that they will be completely removing the talent, right? So this is one thing you need to understand. This is one sector that will be impacting India a lot. Another sector is that the tariff war that we just discussed between India and USA, that USA has imposed on multiple products almost 500% of tariff, which is very huge, right? That can destroy multiple sectors for which such penalty or such tariffs has been imposed, right? So because of this, the economy is in, basically economy is in very seawater, right? It is very difficult to predict that what can happen in future, right? So because of this only we are seeing that here you can see the report highlighted that the domestic financial system is continuously improving, supported by strong capital buffers, low non-performing assets and robust
profitability, right? This is, we are talking about the domestic finance system. Another segment of this can be that we are seeing that people are using more credit cards, people are taking more unsecured loans, which is also bad for the economy, right? Here you can see the Indian economy, it is supported by strong macroeconomic fundamentals that remained the fastest growing major economy in the world during 24-25. I need you to understand, students, that both of these things, we know that we are performing well. We know that we are the fastest growing economy in the world as of now. We are doing much better than other countries in the world right now. But still, there are multiple challenges that we have to overcome in order to become a more developed nation and to achieve our target to become a developed nation by 2047. Right? Apart from this, remember that the macro test conducted by RBI recently stated that the gross non-performing assets of 46 banks, they marginally rise to 2.5% in March 2027. And also here remember that the write-offs of these gross non-performing assets, right, to ratio of the ratio of this gross non-performing assets to SCBs moved up marginally to 31.8%. Remember this data also, right? You need to know this. Also remember one more thing, that the corporate bond market has seen a record issuances in 2025. That means more bonds have been issued so far, right? Corporate bond, this is a debt instrument that are issued by the companies. They raise money through the investors by giving a specific amount or a fixed amount of return to them for a fixed period, right? These bonds are assigned as a credit rating by the rating agency to indicate their creditworthiness, that are your AAA rated, triple B rated, right, AAA negative, double B negative, right, and AAA is basically considered to be the safest one. And if you remember few months back, even the grading of the USA bonds were degraded, right? So these are the bonds and these are the ratings or the credit ratings given to them based on the security of that particular bond. Sometimes you also need to understand that these bonds are generally considered more lucrative. Why? Because they give higher return as compared to that of fixed deposits, right? And some of them are also tax free. Here you can see the corporate bond net outstanding rose to 53.6 lakh crore as end of March 2025, and in 24-25 the AAA rated firms dominated issuances because these are considered more secure. Moving on, students, next, write-offs major factor for the lower NPAs, that is non-performing assets, in the past 5 years, right? The write-offs of these NPAs ratio to the SCBs moved up marginally to 31.8% from 29.5% previous year, while the write-offs by public sector banks exhibited a marginal decline. Next is IFC. This is an arm of World Bank. They have committed 460 crore rupees to integrate to build India's largest battery energy storage system project in Gujarat. And if we talk about the capacity, it is 180 megawatt battery energy storage system, right? That is will be set up in Gujarat. Also, student, Gujarat is the semiconductor manufacturing hub also. Remember this. And this BESS project, basically, this will be supporting the clean energy goals of the state by improving their grid stability. Also, here we will be seeing with the funding structure, as I mentioned, 460 crore rupees will be contributed by IFC, that is an arm of World Bank only, right? Important. If we talk about IFC, headquartered in Washington DC, and Mukhtar Diop, he is the managing director here. Right? Take a note of it, students. Also remember one more thing, this amount will be provided to whom? IndiGrid, right? It will be provided to IndiGrid, that is IndiGrid Trust. Next is KVB, that is your Karur Vasai Bank. It is Karur Tamil Nadu based bank, right? And Hyderabad Telangana based Shema General Insurance Limited. They have entered into a strategic bancassurance alliance. What is bancassurance alliance? When a bank and an insurance company comes together, and insurance company sells their product to the customers of the bank, right? And together they have launched this Shema Kisan Sathi, that is a rural focused dual benefit insurance product aimed at India's agri-centric and rural communities. Take a note of this, students. Next remember, RBI has kept the interest rate on floating rate saving bonds unchanged at 8.05% for July to December 2025. I repeat, RBI announced that the interest rates for their floating rate saving bonds
correct, will remain unchanged at 8.05% for the period July 1st to December 2025, and the interest rates are applicable from 1st of January 2026. Take a note of this. If we compare it to National Savings Certificate, that stands at 7.7%, right? This is 0.35% more than the National Savings Certificate. Here the bond has a fixed tenure of 7 years, right? And the minimum investment here is of 1000 rupees with no maximum limit. Next, Masrec became the first UAE bank to receive the approval from IBU in Gift City. What is IBU? That is your IFSC banking unit, right? That is in Gift City, Gandhinagar, Gujarat. So Masrec, it became the first UAE bank to receive the in-principle approval from Gandhinagar, Gujarat-based IFSCA to set up their new IFSC banking unit, that is IBU, within the Gift City, Gandhinagar, Gujarat. And this new IBU, it will offer various range of services that will include your foreign currency loans, trade finance solutions, treasury and risk management products, and many other things. Next is economy and business. CRISIL, they have revised the India's FY26 GDP forecast at 6.5%, right? Take a note of this. This is important. Then next is awards and recognition. Nirmala Sitharaman ma'am, our finance minister, presented the digital payment awards for 24-25 in New Delhi, and a total of 21 honorees were honored here with the award here, right? And this was basically to honor the institutions advancing India's digital payment ecosystem. This ceremony witnessed the participation from the representative of 39 banks, 84 fintech companies, regulatory bodies, and industry associations. Right? Apart from this, remember, IPPB, right, is 100% Government of India owned under the Department of Post. Right? They leveraged 2 lakh postmen and Grameen Dak Sevaks to provide doorstep banking in 5.57 lakh villages. Also, if we talk about PhonePe, they have recognized for the building offline digital payment infrastructure that will enhance the usage of PhonePe or digital payment system in the remote areas. Also, CUB, right, that is City Union Bank, was awarded for the innovation such as your voice-based UPI 123 Pay that was launched, and for their multilingual chatbots also they were awarded here, right? So take a note of these few awards. Next is Sudhanshu Mittal re-elected as the KKFI president. What is KKFI? That is Kho-Kho Federation of India. And Upkar Singh Vark elected as the general secretary of Kho-Kho Federation of India. Very important, students, right? And Govind Sharma of Maharashtra Kho-Kho Association, who was an executive member of KKFI, was elected as the treasurer of this new regime. Take a note of this also, right? So Sudhanshu Mittal re-elected as the president of Kho-Kho Federation of India. Next, students, China has tested Phytian 2, right? It is a hypersonic vehicle with RBCC engine. What is RBCC? It is rocket based combined cycle propulsion engine, and it is a key enabler in the sustained hypersonic flight. If we talk about this rocket based combined cycle RBCC, it is an advanced engine technology that will combine the rocket and air breathing propulsion in a single system, and it operates in 2 distinct modes, that is in rocket mode as well as in the jet mode, right? So it is your Phytian 2 hypersonic vehicle that has been recently successfully tested. By which country? It was tested by China. Next is Paras anti-drone. They have bagged 6.22 crore rupees French order for indigenous anti-drone systems. So this Paras anti-drone, right? This is Navi Mumbai Maharashtra based company, right? It is a subsidiary of Paras Defense and Space Technologies, and they have received the order here for, or we can say they have received a letter of intent from France company, that is Cerber, correct? And this is for the 30 units of anti-drone systems, that is 30 units of the Chimera 200 anti-drone systems, right? These are worth 22.21 crore rupees. Next is DRDO lab. They have conducted the field trials of SDR, Manpack and CCTS in Uttarakhand. First of all, students, Dehradun Uttarakhand based Defense Electronics Application Laboratory, right, DEAL. This is a laboratory that comes under DRDO, and they have successfully conducted the field trials of the software defined radio, that is SDR Manpack,
and Compact Trans-Horizon Communication System, that is CTCS, where they were tested in Joshimath, Uttarakhand. Right? These trials were conducted in various trains and operational environments with the aim to rigorously test and validate the performance of these systems in the real world. Right? This SDR Manpack, this is an indigenous tactical communication system, and this CTCS, this is an advanced communication system. Next is environment students. New flowering plant Begonia naishirum has been discovered in Arunachal Pradesh. Right? Take a note of this. And this new naishirum honors the Nishi tribe, the largest indigenous community in the Arunachal Pradesh. Next students to obituary. Former Chhattisgarh Governor Shekhar Dutt has recently passed away, as you can see him in the picture, at the age of 80 in New Delhi. Born in 1945 in Gwalior, Madhya Pradesh, and he was the 4th governor of Chhattisgarh from 2010 to 2014 for a period of 5 years. Next is International Plastic Bag Free Day, observed on 3rd of July. This day is basically to raise awareness about how impact or how negative impact the plastic can cause on our environment, right? These single use plastics that are once used and thrown away, because we know these plastics, they cannot be degraded, right, by natural processes, right? And they will be in your environment forever. And you can see in the picture also, these are the penguins and they are on an ice cube, where you can see below it there are multiple single use plastics that are polluting the water or polluting their water bodies, that are the habitation area for these penguins, right? If these are in excess, they will damage the ecosystem in the water bodies. Also, scientists stated that there are multiple small particles of micro, or we can say plastic, that are the microplastic. They have also been found in the human body. Even in the newborn baby, these microplastics were found. So these are quite harmful for us. Hence, we observe this International Plastic Bag Free Day on 3rd of July. Next, Bangladesh in 2002, it became the first country to ban thin plastic bags that are under 20 micro, and New Zealand in July 2023 became the first country to ban thin plastic bags in the supermarkets. Apart from this, if we talk about India, India has also launched multiple initiatives, right? For example, Sikkim in 1998 became the first Indian state to ban disposable plastic bags. Then Swachh Bharat Abhiyan was launched in 2014. Then plastic waste management rules came in 2016. Then there was a rule on thickness also, that how thick the plastic, these polythene bags can be, and if it is greater than that, they won't be in use, they will be illegal, right? So these are some initiatives where we are seeing that India is also contributing to eliminate the plastics. Next is state news students. Ladakh hosted the first Astro Tourism Festival in Leh Ladakh from 27th to 28th of June. Their aim is to foster scientific curiosity and boosting astro-tourism in the region. This event was organized by Bengaluru and organized by Ladakh's Department of Tourism and Indian Institute of Astrophysics. Let me show you a Department of Tourism of Ladakh, Indian Institute of Astrophysics, with the support from ISRO. And this was a 2-day long event. Also here, remember, this key feature of the festival here has been that the night sky observation in the Leh campus, right, where you will be able to, or the attendees here, they will be able to experience the constellations, because in Leh Ladakh the night sky is quite good, right, or the night view is quite good, because there is very less light pollution and the sky is visible very clearly, right, and even the pollution is there less, so sky is clearly visible. Next is Telangana has unveiled TG DEX, India's first state-led digital public infrastructure that will be addressing the challenges in the AI innovation. This TG DEX, right, that is your Telangana Data Exchange. It is aimed at developing cross-domain AI solutions through collaboration between the state, industry partners, research institutions and startups. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Next, identify the new name to which CK Birla Group rebranded itself in May, marking its shift towards a future-focused technology and service approach. That is the CKA Birla Group. Next, in May, which company signed a power purchase agreement with Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited for its 810 megawatt solar power project at the Pugal Solar Park in Bikaner, Rajasthan. So it is Naval Lignite Corporation. It is a 110 megawatt project.
Next, after Netradin and Jaspe, which company became then their third unicorn after raising $200 million in a Series F funding round? It is Porter. Porter, what does this company do? It takes goods from one location to another location, right? It is an efficient urban logistics company. Next, in May, Government of Dash and Indian National Space Promotion and Authorization Center, that is in space, they have signed a memorandum of understanding that will focus on establishing center of excellence for space technology and public private space manufacturing park. So it is government of Karnataka that is partnered with InSpace for setting up these public private space manufacturing parks as well as center of excellence. Next, Game Developers Association of India, they have signed a memorandum of understanding with Service Export Promotion Council to boost India's gaming and entertainment export during the Wave Summit that was held in Mumbai. Right, take a note of this. Next, which Indian conglomerate signed a memorandum of understanding with Bhutan Drug Green Power Corporation to jointly develop a 5,000 megawatt of hydropower projects in Bhutan. The company is Adani Group. Next, mention the public sector bank that became one of the world's most profitable companies in FY25 with a net profit of $9.2 billion. It is State Bank of India. Your homework is to tell me that SBI gave a dividend of how much amount to the government. Tell me that also. Moving on, in May, which B2B, that is business to business e-commerce platform, secured approximately $40 million in funding round, achieving a valuation of $1 billion and entering Indian Unicorn Club. It is JSW One Platforms Limited. Next, according to the United Nations Department of Economic and Social Affairs, their latest report titled The World Economic Situation and Prospectus as of mid-2025 that was released in May 25, what is India's GDP forecast for calendar year 25? It is 6.3%. Next, which Indian shipbuilding organization entered into a strategic collaboration with Dubai UAE based Dry Docks World to develop world-class ship repair clusters across India? It is Cochin Shipyard Limited. Next, in May, the global financial service firm Morgan Stanley has upgraded their forecast for Indian economy to what percent year on year for FY26 from 6.1%. It is 6.2%. Next, in May, Adani Defence and Aerospace, they signed a binding collaboration agreement with Sparton to localize the production of advanced anti-submarine warfare systems including sonobuoys for the Indian Navy and global markets. Next, identify the USA-based organization that became the first cryptocurrency exchange to join Standards and Poor's Index, S&P 500 Index. It is Coinbase Global Incorporation. This is a cryptocurrency exchange. Next, which organization signed a memorandum of understanding with Green Business Certification Institute with an aim to increase the number of garment factories in India that receive the LEED certification, that is Leadership in Energy and Environmental Design, a global recognized system assessing a building's environmental impact and sustainability. It is Apparel Export Promotion Council. Next, Reserve Bank of India approved the renaming of North East Small Finance Bank Limited to Dash as per the Gazette of India notification. So it has been renamed to Slice Small Finance Bank. Next, in May, ICRA Limited, a credit rating agency, projected India's GDP growth at what percent of FY25? It was at 6.3% of the GDP. Next, in May, Dash Rating Agency raised India's medium-term growth potential by 0.2 percent points to 6.4% over the next 5 years compared with 6.2% previously. This is Fitch Ratings that has revised their growth projections for India. According to the special 2025 Special 301 report released by United States Trade Representative, India को place किया गया on the priority watch list ड्यू टू द इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. राइट, मतलब कि यहाँ से जो भी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे है, यहाँ पे जो भी हम आईपी राइट्स होंगे हमारे, राइट, उनको हम चेक करेंगे, उन पे नज़र रखी जाएगी, करेक्ट, एंड उसको मॉनिटर किया जाएगा. ऑल्सो यहाँ पे इस रिपोर्ट बताती है कि जो तुर्कमेनिस्तान है, राइट, उसको इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था.
मूविंग ऑन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, इनके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे इंडिया की रैंक पूछी गई है 2023 की इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या रहेगी? इंडिया 130वें पोजीशन पे आ जाता है इन दिस इंडेक्स। आइसलैंड ने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे सिक्योर करी। आइसलैंड के बाद नॉर्वे, देन स्विट्जरलैंड, फिर डेनमार्क, फिर जर्मनी एंड इंडिया 130वें पोजीशन पर आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं किसने टॉप किया, अमंग द डेवलप्ड एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी एज पर द लेटेस्ट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि रिलीज की गई जेपी मॉर्गन के द्वारा अभी रिसेंटली। तो हमारी इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया अमंग द डेवलप्ड एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड स्केल पे। Next, which of the following state is not among the top 5 Indian states with the highest GST collection for FY25 as per the data? तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर टॉप इज नॉट अमंग द टॉप 5। टॉप 5 देखें तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, उसके बाद गुजरात, फिर तमिलनाडु एंड फिर आ जाता है फिफ्थ यूपी। नेक्स्ट, who launched the report on India's priority corridors for zero emission trucking in May aimed at promoting cleaner and sustainable freight movement? तो अजय कुमार सूद, इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई इंडिया की प्रायोरिटी कॉरिडोर्स पे फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2025 रिलीज्ड बाय द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर एंड नॉर्वेनियन रिफ्यूजी काउंसिल, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेस्ड रिपोर्टेड इन इंडिया 2024? मतलब इंटरनली डिस्प्लेस मतलब इंडिया के अंदर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुए किसी भी रीजन से। तो इंटरनली डिस्प्लेस लोगों का डाटा क्या है इंडिया में? वो है 5.4 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए इंडिया में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिलीज किया 23वां एनुअल साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट्स को इन में ऑन बिहाफ ऑफ द साउथ एशिया मीडिया सॉलिडेरिटी नेटवर्क, राइट? तो आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स। नेक्स्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इंडियन एमएसएमई सेक्टर, progress and challenges about Indian MSME sector based on survey of 2097 MSMEs across 9 sectors in manufacturing, service and trading. क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एमएसएमई कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट ये स्टेडली ग्रो कर गया रीचिंग 43.59 इन FY23, 45.73% इन FY24 एंड FY25 में बढ़ के कितना हो गया 45.79%। मार्जिनल इंक्रीज देखेंगे आप FY24 और FY23 में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कैंटर ब्रांड्स 2025 की वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वाज नॉट अमंग द इंडियन ब्रांड्स फीचर्ड इन द टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स? तो यहाँ पे विप्रो यहाँ पर इसमें लिस्टेड नहीं है, राइट? TCS की अगर हम रैंक देखें 45, HDFC बैंक की बात करें तो 56, एयरटेल की बात करें तो 66 एंड इन्फोसिस 73। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, जो मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट रिलीज की गई है उसके हिसाब से इंडिया की जो ऑयल डिमांड है 2025 के लिए इट इज प्रोजेक्टेड अराउंड 5.74 बिलियन बैरल्स पर डे, राइट? दैट इज इतने बैरल्स पर डे, नॉट मिलियन बैरल्स पर डे, 5.74 मिलियन बैरल्स पर डे की यहाँ पे प्रोजेक्शन लाई गई है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन का आर्म है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई 2025 की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, जो हाईलाइट करती है 259.3 मिलियन पीपल अक्रॉस 53 कंट्रीज एंड टेरिटरीज दे आर एक्सपीरियंस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2024। मतलब काफ़ी फूड इनसिक्योरिटी, फूड की कमी देखने को मिली थी। क्वेश्चन है किस इनिशिएटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग दिस रिपोर्ट? तो ये है आपका ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ये इनिशिएटिव है जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई कि काफ़ी ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिली थी 2024 में। नेक्स्ट, नेम द इंडियन एयरपोर्ट दैट रैंक 9th ग्लोबली इन द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट बाय पैसेंजर ट्रैफिक। ये रिपोर्ट आपकी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की गई थी इन मई 2024। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, राइट, इनकी रैंक रही 9th ऑन द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट। जैक्सन एटलांटा एयरपोर्ट आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज ये फीचर कर रहे हैं इन द टाइम मैगजीन्स इनॉग्रल
टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलेंथ्रॉफी 2025 की लिस्ट, मतलब ये पहला एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन मीन्स, राइट। तो किन्होंने इस लिस्ट में यहाँ पे फीचर किया, राइट, हु वर फीचर्ड इन द टाइम्स मैगजीन्स लिस्ट। तो यहाँ पे निखिल, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, निखिल कामत, अजीम प्रेमजी, चारों इस लिस्ट में थे। एंड मुकेश अंबानी या नीता अंबानी ये टाइटन कैटेगरी में यहाँ पे लिस्ट किए गए। निखिल कामत यहाँ पे वन ऑफ द यंगेस्ट इंडिविजुअल्स थे जो इस लिस्ट में आए। नेक्स्ट, एज पर द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डाटा रिलीज्ड इन May, इंडिया लॉस्ट अराउंड हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट। तो इंडिया ने लूज किया 18,200 हेक्टेयर्स ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट 2024 में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2025 बाय हेनले एंड पार्टनर्स, व्हाट इज द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मिलेनियर्स। तो 27th पोजीशन पे आ जाती है आपकी मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मिलेनियर्स। ठीक, 51,000 मिलियनर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मोर देन 51,000 मिलियनर्स। एंड अगर मैं बिलियनर्स की बात करूँ तो 25 बिलियनर्स देखने को मिलते हैं। मूविंग ऑन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली रिलीज किया फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल्स हेल्थ रिपोर्ट इन May, जो हाईलाइट करता है इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एनिमल डिजीज एंड जूनोटिक रिस्क को। तो वो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आयोग, दैट इज नीति आयोग, इनकी एक ये रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि बताती है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज डज एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जीडीपी। तो ऑलमोस्ट 29% कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई सेक्टर टू इंडियाज जीडीपी। Next, students, is our homework section. First is who has been appointed as CBDT chairman, reappointed as the CBDT chairman for the next 1 year. Second question, tell me recently, if I ask you, name that captain or name that astronaut who went to International Space Station on the Axiom 4 mission, and talk about this Axiom 4 mission also. Name the Dragon capsule that was used here. What was the name of it, and which rocket was used to lift this Dragon capsule to International Space Station? And this Axiom 4 mission is a collaboration of which industries or which organizations? Tell me that also. Then third question, tell me who became the first astronaut in Titan space mission, and when this Titan space mission will be launched. Fourth, tell me who has recently won the Ostrava Golden Spike. What is this? For which event or sport this is related to, and who secured the gold medal here? Then fifth question, tell me students, which state will be hosting, or which state and city will be hosting the Khelo India University Games in November? So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. Hello students, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 4 जुलाई के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे सी फ्लड, ये एक यूनिफाइड फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम है जो अभी लॉन्च किया गया है। देन इंडिया एंड यूएन ने एक्सप्लोर किया ग्रीन स्टील एंड हाई ग्रेड एल्यूमिनियम के ऊपर कोलैबोरेशन। देन सीईए एंड आईआईटी रुड़की, इन्होंने एमओयू साइन किया टू बूस्ट द पावर सेक्टर रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम किया एनआईपीसीसीडी को एज सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सारी चीजें एंड मेनी मोर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। एक और चीज स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे रेगुलरली ये वीडियो अपलोड करते हैं, तो एंड तक जरूर देखा करो इन वीडियो को। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below.
देन नेक्स्ट है घाना। घाना एंड इंडिया के द्वारा क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट इनिशिएटिव के ऊपर काम किया गया ताकि वीट को हम क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकें, उसकी जीनोम एडिटिंग करके उसको ऐसा बना सकें ताकि वो क्लाइमेट चेंज में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसको वो इजिली बेयर कर सके, क्वालिटी आउटपुट हमें देखने को मिल सके, क्वांटिटी बेटर हो सके, राइट, ज़्यादा न्यूट्रिशनल वो हो सके, राइट। और इसी के ध्यान में रखते हुए इंडिया का ही आपको एक ध्यान में रखना है वैरायटी ऑफ वीट जो कि है वीट प्राइड 999। ये इंडिया के ग्रीन प्राइड के द्वारा बनाया गया जो कि एक ड्रॉट एंड हीट रेजिस्टेंट है, न्यूट्रिशन से फुलफिल्ड है एंड इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा ताकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोड्यूस कर सके एंड घाना इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। इवन इंडिया को ध्यान रखेंगे, इंडिया का जो इम्पोर्ट था वीट का $400 मिलियन का था एनुअली, जो कि हम एक तरीके से कैंसिल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसकी लोकल फार्मिंग को बढ़ा दें तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने रिलीज की बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर को जून 2025 में। ये रिपोर्ट एक हाफ ईयरली पब्लिकेशन है, साल में 2 बार इसको रिलीज किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है एंड ये बताता है कि मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में क्या स्टेबिलिटी, क्या रिस्क हमें देखने को मिल सकते हैं इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को। यहीं पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर बात की गई, यहाँ पे बात की गई प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, यहाँ पे राइट ऑफ्स के ऊपर बात की गई एंड अगर हम देखें कॉर्पोरेट बॉन्ड की तो वो मार्केट भी हमें ग्रो करती हुई दिखी इन FY25, राइट। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, करेक्ट, जियोपॉलिटिकल रीजंस ऐसे चल रहे हैं, वॉर देखने को मिल रही हैं, यूएसए ने इंडिया पे एंड चाइना पे 500% के टैरिफ भी इंपोज किए हैं कई सेक्टर्स में, तो इससे इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग हैं वो अब सिक्योर रिटर्न्स चाहते हैं, इसीलिए ये कॉर्पोरेट रेंज बढ़ते हुए दिखे एंड इसमें भी जो ट्रिपल रेटेड है, राइट, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर बॉन्ड माने जाते हैं कि ये कभी फेल नहीं हो सकते, राइट। तो ये ट्रिपल रेटेड बॉन्ड्स की सबसे ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली एज कंपेयर टू अदर, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के अलावा जो राइट ऑफ्स हैं ये मेजर फैक्टर्स थे फॉर लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन पास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि कई सारे लोन्स को राइट ऑफ कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो लोन पे बैक नहीं कर सकते। देखो, इंडिया को 2047 तक एक डेवलप नेशन बनना है, तो इसके लिए इंडिया को कई सारे इनिशिएटिव्स लाने पड़ेंगे, काफी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। इवन आप देख रहे हैं कि इंडिया में अब क्या एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर काम कर रहे हैं, इवन गोल्ड लोन्स बहुत ज्यादा ले रहे थे। तो सरकार के द्वारा एक और इनिशिएटिव लाया गया कि अगर आप 100 रुपए का गोल्ड रखते हैं तो इसके खिलाफ आप सिर्फ 75 रुपए का ही लोन ले सकते हैं, जो कि पहले 85 रुपए तक का लोन होता था, राइट। ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि हमारी इंडिया की स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हुए दिखेंगे। चलिए, और इवन अगर हम बात करें FY26 के लिए आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं आईएफसी। ये वर्ल्ड बैंक का ही एक फाइनेंशियल आर्म है। इन्होंने अभी 460 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की इंडिग्रिड में, जो कि इंडिया का पहला पावर इन्वेट था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये पैसा यूज किया जाएगा ताकि इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके गुजरात में, राइट। इंडिग्रिड के द्वारा ही ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, कहां पर? गुजरात में। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, राइट। इससे होगा क्या? इंडिया की स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी इन द एनर्जी सेक्टर। ग्रिड्स पे हम रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस कर सकते हैं एंड 180 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट रहेगा जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा एंड जब पीक डिमांड होगी इस सिस्टम से, इस प्रोजेक्ट से, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती हुई दिखी, वहां पर ये इंश्योर करेगा कि रिलायबल पावर टाइमली पहुंच सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स केवीबी। ये है करूर वैसाय बैंक, तमिलनाडु बेस्ड करूर वैसाय बैंक है एंड इन्होंने शेमा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर शेमा किसान साथी को लॉन्च किया अंडर बैंकरेंस। बैंकरेंस क्या होता है? जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है ताकि इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल कर सके टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये शेमा किसान साथी ये एक रूरल फोकस्ड ड्यूल बेनिफिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहेगा जिसका एम रहेगा इंडिया का एग्री सेंट्रिक एंड रूरल कम्युनिटीज को बेनिफिट पहुंचाना।
मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का अनचेंज रखा एट 8.05% जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए, पेबल रहेगा जो 1 जनवरी 2026 को। यहीं पे अगर हम देखें जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो 7.7% पे है एंड ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 0.35% ज़्यादा यहाँ पर दे रहा है। ये जो बॉन्ड है तो एक फिक्स टेन्योर रहेगा, 7 साल का टेन्योर रहेगा एंड मिनिमम 1000 रुपये से आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम कोई लिमिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। फिर आ जाते हैं माशरेक, ये वो पहला यूएई बैंक बन गया जिन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फॉर आईबीयू इन गिफ्ट सिटी, राइट। माशरेक ये पहला यूएई बैंक है जिनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल रहा है गांधी नगर गुजरात बेस्ड आईएफएससी से, ताकि अपना आईबीयू सेटअप कर सकें जो कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिट को। इससे काफ़ी सारी सर्विसेज हमें देखने को मिलेंगी जैसे फॉरेन करेंसी लोन्स, ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशंस, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंड इससे इंडिया एंड यूएई की टाइज भी प्रमोट होते हुए दिखेंगे, कैपिटल फ्लोज बढ़ते हुए दिखेंगे। फिर आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे, क्रिसिल जो कि एक मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रिसिल, इन्होंने अभी इंडिया की FY26 के लिए जीडीपी प्रोजेक्ट करी है 6.5%। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम ने प्रेजेंट किया डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स को 2024-25 के लिए 21 इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे सम्मानित किया गया, राइट, जो कि इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल IPPB, राइट, इन्होंने ये 2 लाख से भी ज़्यादा पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवक्स हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं जो कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं 5.57 लाख विलेजेस में। फोन पे की बात करें, इनके द्वारा अभी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ताकि रिमोट एरियाज में भी डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो इनके द्वारा UPI 123 पे जो इन्होंने बनाया था, करेक्ट, वॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। मल्टीलिंगुअल चैटबॉट्स के लिए एंड टैप एंड गो पेमेंट सिस्टम यूजिंग वेरिएबल जो इन्होंने लॉन्च की उसके लिए इनको सम्मानित करा गया। एंड ये डिजिटल पेमेंट अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा प्रेजेंट किए गए एंड निर्मला सीतारमन मैम के द्वारा यहाँ पे कन्फर किए गए इन अवार्ड्स को, राइट, उन्होंने दिए इन अवार्ड्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर सुधांशु मित्तल, इनको रिलेक्ट किया गया एज द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट एंड उपकार सिंह वर्क को जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंट किया गया एंड गोविंद शर्मा को, राइट, महाराज जो कि महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन से हैं, राइट, इनको यहाँ पे ट्रेजरर अपॉइंट किया गया है। तो ये 3 अपॉइंटमेंट भी मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स चाइना के द्वारा अभी फिएटियन 2, ये एक हाइपरसोनिक व्हीकल है जिसको टेस्ट किया गया विद RBCC इंजन। RBCC क्या होता है? RBCC बेसिकली है रॉकेट बेस्ड कंबाइंड साइकिल। ये 2 मोड्स में वर्क करता है, एक होता है रॉकेट मोड, एक होता है जेट मोड। इससे क्या होता है कि जो रॉकेट है सुपरसोनिक हाइपरसोनिक बना रहता है। हाइपरसोनिक होता है जब 10 मैक्स से ज्यादा यहाँ पर स्पीड हो जाती है, वो हो जाता है हाइपरसोनिक, राइट। सुपरसोनिक जब वो 5 मैक्स से ज्यादा हो जाता है, राइट, आई करेक्ट, जब 12 मैक्स से ज्यादा हो जाता है तब वो हाइपरसोनिक हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है पारस एंटी ड्रोन, इनको 22 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। फ्रेंच की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है सर बेयर के, राइट, ये फ्रांस की कंपनी है, इनसे ये 22 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला ताकि काईमेरा 200 एंटी ड्रोन सिस्टम्स को यहाँ पे बनाया जा सके एंड इनको डिलीवर किया जा सके। अनदर थिंग कि हम इन ड्रोन्स को इस सिस्टम को, एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्सपोर्ट करेंगे जिससे इंडिया को बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। एंड ये पारस एंटी ड्रोन जो कि एक सब्सिडरी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की, उनको ये 22.21 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, राइट। पारस यहाँ पे डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा एंड मैन्युफैक्चर करेगा एंड इवन टेस्ट करेगा इन सिस्टम्स को। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर डीआरडीओ की लैब है डील, जो कि है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, राइट, ये डीआरडीओ का ही एक लेबोरेटरी है। इन्होंने सक्सेसफुली ट्रायल किया एसडीआर मैनपैक का एंड सीटीसीएस का। एसडीआर मैनपैक क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, एंड सीटीसीएस क्या है? कॉम्पैक्ट ट्रांस होराइजन कम्युनिकेशन सिस्टम। एसडीआर बेसिकली आपका रहेगा एक एडवांस इंडिजीनियस टेक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सीटीसीएस आपका एक एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा। मूविंग ऑन, एंड एक और चीज, टेस्ट कहां किए गए? जोशीमठ उत्तराखंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स। न्यू फ्लावरिंग प्लांट बेगोनिया निशिरोम, राइट, ये बेसिकली याद रखेंगे निशी एक ट्राइब है, लार्जेस्ट इंडिजिनियस कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बिहार पे ये नई फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज की नेमिंग की गई जो कि पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट
ऑबिट्री पर आ जाते हैं। फॉर्मर छत्तीसगढ़ के गवर्नर शेखर दत्त, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 80 इन न्यू दिल्ली। 1945 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में, एंड ये चौथे गवर्नर रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के 2010 से लेकर 2014 तक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे को, जो कि 3 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है प्लास्टिक के नेगेटिव इंपैक्ट्स के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत खराब है। आप इसको पिक्चर में से एनालाइज कीजिए। पेंगुइन है, ग्लेशियर पर है जो इनका इकोसिस्टम है, राइट। एंड नीचे आप देख सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये कभी डिग्रेड नहीं हो सकती। ये इनके इकोसिस्टम को काफी हार्म कर रही हैं, राइट। इवन हम देखें तो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और बताया ह्यूमंस में भी माइक्रो प्लास्टिक्स देखने को मिले हैं, बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक्स देखने को मिले हैं। इवन न्यूबॉर्न बेबी में माइक्रो प्लास्टिक्स देखने को मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, राइट। तो इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इवन अगर हम देखें बांग्लादेश ने 2002 में ये पहली कंट्री बन गई थी जिन्होंने थिन प्लास्टिक को बैन किया। न्यूजीलैंड जुलाई 2023 में इन्होंने थिन प्लास्टिक को बैन किया। इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया ने 1998 में सिक्किम ने डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स को बैन किया था। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था 2014 में कि प्लास्टिक्स को खत्म प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सके, वेस्ट सेग्रीगेशन की जा सके। देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे 2016 में। थिकनेस के ऊपर रेगुलेशन आई थी कि 20 माइक्रोन से ऊपर अगर प्लास्टिक होगी तो वो बैंड हो जाएगी, राइट। तो इंडिया काफी बड़े स्केल पे भी काम कर रहा है प्लास्टिक को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर। लद्दाख होस्ट करेगा पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, कहां पर? लद्दाख में 27 से 28 जून तक। इससे साइंटिफिक क्यूरोसिटी बढ़ेगी, एस्ट्रो टूरिज्म के ऊपर काम किया जाएगा इन द रीजन। बेसिकली स्पेस को, यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया जाएगा। इवन यहीं पे हम देखेंगे तो एक इवेंट करा जाएगा जहां पे हम स्पेस को, गैलेक्सीज को, आसमान को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि लद्दाख में एक तो लाइट पॉल्यूशन नहीं है, दूसरा वहां पर पॉल्यूशन, नॉर्मल पॉल्यूशन भी नहीं है जिससे हमारा इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स आ जाए। तो इससे क्या होता है, जो स्पेस है हमें वो काफी ज्यादा क्लियर होता है एंड ऑब्जर्वेशन में काफी बेनिफिशियल देखने को रहता है। एंड इसी से यहां पर हम देखेंगे एस्ट्रो टूरिज्म को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। लोग यहां पर आएंगे दूर दूर से स्पेस को देखने के लिए, इस इवेंट को, इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। इससे साइंटिफिक क्यूरोसिटी भी लोगों में बढ़ती हुई दिखेगी। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ लद्दाख एंड इसरो के द्वारा मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा एक दो चीज और याद रखेंगे, जैसे तेलंगाना ने टीजी डेक्स को लॉन्च किया, जो कि है तेलंगाना डाटा एक्सचेंज। ये इंडिया का पहला स्टेट लेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एड्रेस करेगा चैलेंजेस इन द एआई इनोवेशन, राइट। एआई के ऊपर सॉल्यूशंस लाने के लिए कि एआई को यूज करके कैसे हम स्टेट्स को, इंडस्ट्रीज को, राइट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, स्टार्टअप्स को बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में और बेनिफिशियल रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया युगम, यूनाइटिंग अकेडमिया, इंडस्ट्री एंड इनोवेटर्स फॉर विकसित भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव को न्यू दिल्ली में। पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने ऑर्गेनाइज किया कॉन्क्लेव इन कोलैबोरेशन विद वाधवानी फाउंडेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एंड वाधवानी फाउंडेशन ने मिलके यहाँ पे ये लॉन्च किया है युगम को, जो कि है यूनाइटिंग अकेडमिया, इंडस्ट्री एंड इनोवेटर्स फॉर विकसित भारत, जो कि एक इनोवेशन कॉन्क्लेव है, न्यू दिल्ली में हुआ, राइट। जिससे हम बात करेंगे कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सके इंडिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन दैट स्टेट जिन्होंने रिसेंटली दैट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एन एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम टू मॉनिटर फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट्स एंड फेलिंग ट्रीज। तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट मेंशन दैट स्टेट जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड पॉलिसी इन द मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड शिप रिसाइक्लिंग पॉलिसी 2025 के लिए। तो मेंशन दैट स्टेट, कौन सी स्टेट है वो महाराष्ट्र स्टेट रहेगी। एंड टारगेट है कि 2030 तक 6600 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसके थ्रू यहाँ पर हम देखेंगे 40,000 से भी ज़्यादा जॉब जनरेट्स होती हुई दिखेंगी। एंड 2047 का टारगेट देखें तो ये रहेगा 18,000 करोड़ रुपए का, जहां पर हम 3.3 लाख जॉब जनरेशन का काम करते हुए दिखेंगे शिप बिल्डिंग सेक्टर में। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 21st पोजीशन पर आता है ग्लोबली इन शिप बिल्डिंग, राइट, जहां पर इंडिया के पास 1% शेयर है ग्लोबली, राइट। अगर मैं शिप रिसाइकलिंग की बात करूं, रिसाइकलिंग में इंडिया 2nd पोजीशन पर आता है एंड हमारे पास 32.6% का यहाँ पे ग्लोबल शेयर है। नेक्स्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपडेट किया इंडिया का ऑफिशियल कोस्ट लाइन लेंथ को
8 किलोमीटर की है। पहले जो लेंथ थी कोस्ट लाइन 9516 किलोमीटर की थी, जो कि अब बढ़ के नियरली 50% से यहाँ पे बढ़ गई है, ऐड हुआ है। 3537 किलोमीटर्स ऐड हुए हैं। एंड अब जो कोस्ट लाइन है वो है 11,098 स्क्वायर किलोमीटर की, राइट। मैक्सिमम एडिशन जो हुआ है वो गुजरात के कोस्ट पे हुआ है, राइट। एंड गुजरात हमारी लॉन्गेस्ट कोस्ट हमारी मानी जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी वर्ल्ड की पहली डैश नेम्ड बाबूजी वनम। वनम मतलब गार्डन होता है, तो ये वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन रहेगा जिसका नाम है बाबूजी वनम, नॉट गार्डन, बाबूजी वनम, राइट। ये इनॉग्रेट किया गया तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा जी के द्वारा कान्हा शांति वनम में हैदराबाद में एज अ पार्ट ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ पूज्य बाबूजी महाराज। तो ये है एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन, जहां पे हम देखेंगे 40 से भी ज़्यादा स्पीशीज हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेडिकल कंडीशन फॉर विच इंडिया ने कंडक्ट किया पहला ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल का, अप्रैल में हुआ ये, राइट। ब्रिक्स इन स्टेम के द्वारा किया गया इन बेंगलुरु एंड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के द्वारा मिलकर ये पहला ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल करा गया। किस चीज़ के लिए किया गया? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेसिकली एक आपकी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्लड नॉर्मली क्लॉट नहीं होता, इसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द पोर्टल। पोर्टल मतलब वेबसाइट जो लॉन्च की गई हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा, ताकि जो सिंप्लीफाई है एप्लीकेशन प्रोसेस उसको किया जा सके फॉर वेरियस सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स के लिए। मतलब जिससे वो जो सर्विसेज लॉन्च की जाएंगी, राइट, उसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो भरा जाएगा कस्टमर्स या फिर बोलो लोगों के द्वारा, उसको ईजी बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। क्या नाम रहेगा इस पोर्टल का? ई कल्याण पोर्टल का नाम रहेगा। नेक्स्ट, ऑन 69th फाउंडेशन डे जो कि 1 मई को आता है ऑफ ईडी का फाउंडेशन डे था, 69th फाउंडेशन डे था, 1 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड पंकज चौधरी इन्होंने ऑनर किया सेवरल ईडी ऑफिसर्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिशियस सर्विस ड्यूरिंग द इवेंट? तो वो है अभिषेक गोयल। एंड 23 ऑफिसर्स को यहाँ पे एंड जोनल यूनिट्स को ऑनर किया गया फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस, जिसमें से अभिषेक गोयल को प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा इवेंट एजिंग विद डिग्निटी इनिशिएटिव्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, जिसको अटेंड किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ऑन 2 मई एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर इन दिल्ली। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, ये एक फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द अडानी ग्रुप, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फ्यूल सेल ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक्स इन रायपुर छत्तीसगढ़। मेंशन द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस व्हीकल। तो कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाएगा? हाइड्रोजन यूज़ किया जाएगा। अभी एक हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को भी लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स, कहाँ पे? लेह लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है, एनटीपीसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इन बसेस को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इनके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया इन भोपाल ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, जो कि 19,244 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने स्टैब्लिश किया अपना नया रीजनल ऑफिस इन मई टू स्ट्रेंथन द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन द रीजन। तो वो है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, मेंशन द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसको डिक्लेयर किया गया बैगर फ्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो कौन सी वो इंडियन सिटी है? वो है इंदौर, मध्य प्रदेश को बैगर फ्री डिक्लेयर किया गया है। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव की गई इंडिया यूजीसी इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के द्वारा। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जो कि अपना कैंपस मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश करने वाली है। तो क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने वाली है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसका नाम बताओ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया एटी कोली दूती पार्ट, जो कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ द टी गार्डन वर्कर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 5,000 टू ईच परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर ऑफ द टी गार्डन्स इन द स्टेट। तो असम के द्वारा यहाँ पे 5,000 रुपये देने की बात की गई टू ईच परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर। ये वन टाइम असिस्टेंस है जो उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नेम द इनोवेटिव वेटरनरी एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन मे, जो कि पेट्स, फार्मर्स इनको एंड पेट ओनर्स को कनेक्ट करने का काम करेगा, वो है पेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट,
According to the official data released by the Ministry of Port Shipping and Waterways, in May, 12 major ports of India registered a 4.3% increase in cargo handling from 819 million tons in FY24 to approximately 855 मिलियन टन्स इन FY25। मतलब हमारा जो ट्रैफिक है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, राइट। एंड पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि ओडिशा में है, एंड गुजरात बेस्ड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, इन दोनों ने एक टारगेट अचीव किया ऑफ बिकमिंग और ऑफ कार्गो हैंडलिंग जो कि है 150 मिलियन टन्स का कार्गो हैंडलिंग का उन्होंने टारगेट अचीव किया है हर साल का। नेक्स्ट, इन में वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डेडिकेट किया इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फंडेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICGEB बायो फाउंड्री को, राइट। ये 31st बोर्ड मीटिंग ऑफ गवर्नर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये बायो फाउंड्री है, राइट, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपका जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। वेयर डिड इसको लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। एंड यहाँ बताया जा रहा है कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है वो $10 बिलियन होती थी 2014 में, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से इंक्रीज हो गई है, $165.7 बिलियन हमें देखने को मिल रही है 2024 में। एंड इसका टारगेट है कि फर्दर हम $300 बिलियन इकोनॉमी को अचीव कर दें बाय 2030। इसके बाद आते हैं इंडिया का पहला मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान, ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन में। ये मिशन विल यूज मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 टू रीच अ डेप्थ ऑफ 6000। तो मत्स्य 6000 का नाम ही ये है, एंड 6000 यहाँ पे डेप्थ को बताता है कि हम 6 किलोमीटर नीचे, जो कि 6000 मीटर के बराबर होता है, इतना नीचे हम समुद्र के अंदर जाएंगे 3 साइंटिस्ट की मदद से, राइट, जहाँ पर हम रिसर्च को कैरी आउट करेंगे। नेक्स्ट, किस इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने इन कंसल्टेशन विद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल प्रोहिबिट किया यूज ऑफ सेवरल मेडिकली इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल्स इन द एक्वाकल्चर सेक्टर इन मे। तो कौन सी इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने लॉन्च किया 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स को इन द सीमेंट इंडस्ट्री अक्रॉस 5 स्टेट। ये जो पायलट फैसिलिटी है टेस्ट बेड की, ये कहाँ पर लोकेटेड है, बल्लभगढ़ हरियाणा में। आने से क्या होगा, कार्बन कैप्चर होगा, जो कि पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में जा रहा था, अब वो यहाँ पे इन सीमेंट इंडस्ट्री में इन टेस्ट बेड्स में कैप्चर किया जाएगा, जिससे पॉल्यूशन कम होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, किस स्टेट ने इंडिया में रिसेंटली ऐड किया 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को टू इट्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिस्ट, इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 62 टू 74। तो 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूपी के द्वारा ऐड किए गए हैं। यूपी के द्वारा ही इनिशियली ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी, एंड कंगना रनौत इनकी ब्रांड एम्बेसडर तब अपॉइंट की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने सैंक्शन किया एडिशनल 2.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, राइट। एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर ये एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सैंक्शन किया एडिशनल 2.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच द राइस वाज एलोकेटेड, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एलोकेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गर्डर एज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। कहाँ पर लॉन्च किया गया इसको, कलम्बोली महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी, इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि एक कैंपेन है अक्रॉस 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टू कॉम्बैक्ट व्हाट, टू कॉम्बैक्ट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, राइट, भुखमरी को कॉम्बैट करने के लिए, एंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ यूपी इसको लॉन्च किया गया है, राइट। एंड यहाँ पर एम है कि ऑलमोस्ट 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे हेल्प की जाएगी, एंड 400 कैलोरीज आपके न्यूट्रिशन स्नैक्स के तौर पे यहाँ पे डिलीवर की जाएगी, करेक्ट। एंड 3 से 6 साल के बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, इनके द्वारा भी एक कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जो कि है नई दिशा अ पाथ बैक टू लर्निंग, जिसका एम क्या है, जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं उनको वापस से स्कूल में लाना एंड उनकी एजुकेशन को पूरी करना। तो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, सांगरी, ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल स्लेंडर बीन है, खेजरी ट्री पे ये ग्रो होती है, एंड इसको अभी जीआई टैग मिला है। पूछा जा रहा है ये प्रोडक्ट कहाँ का है, ये राजस्थान का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीबीडीटी चेयरमैन, reappointed as the CBDT chairman for the next 1 year. Second question, tell me recently if I ask you name that captain or name that astronaut
who went to International Space Station through the on the Axiom 4 mission. And talk about this Axiom 4 mission also. Name the Dragon capsule that was used here. What was the name of it, and which rocket was used to lift this Dragon capsule to International Space Station? And this Axiom 4 mission is a collaboration of which industries or which organizations? Tell me that also. Then third question, tell me who became the first astronaut in Titan space mission, and when this Titan space mission will be launched. Fourth, tell me who has recently won the Ostrava Golden Spike. What is this? For which event or sport this is related to, and who secured the gold medal here? Then fifth question, tell me students, which state will be hosting, or which state and city will be hosting the Khelo India University Games in November? So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.